new unicorns in this domain, right? So this is the quantum of things, but these are the things to boast about, to get happy. But I will, since we are talking about finance, so I'll be very careful and I'll be very logical as well in this. So if you see the total funding that was doing in first half of 2025 to first half of 2024, it increased by 8%, right? Late stage, it was the quantum of 3 billion US dollar. It raised by 11%. The growth is a startup. It was around 2 billion US dollar. It rose by 18%. But for today's session, we are discussing about early stage startups, right? So the early stage startup, the funding amount is US dollar point 0.406 billion US dollars, and it decreased by 31%, right? And what was the reason? Because finance, the funding and all, this is something which usually startups in the early stage, they ignore, and they find themselves into valley of death, which is a stage of the startups, right? So in today's session, uh, I hope that we will give more clarity to the participants of the finale on that what is the critical role of your attitude, then grants, and then raising the equity. So why this financial opportunity? It shouldn't be like every financial opportunity should be taken up, right? So this is very important for the participants. And if we speak about other thing, even the grants, so we'll get to see that what is the factors which are lucrative to look for the grants. हमें क्यों फंडिंग ग्रांट्स की तरफ जाना चाहिए, एंड कौन से फैक्टर्स हैं. सो मैम, आई फील दैट टुडे सेशन आई विल बी एबल टू, टुगेदर विद यू, आई विल बी एबल टू नेविगेट दिस चैलेंज. हम लोग इसके थ्रू जाएंगे एंड Yeah, विल ट्राई टू एडुकेट देम मोर, राइट? sure. And we'll take up more and more questions. Thank you, ma'am. Yeah. Funding is really an important factor, as everybody knows, and the impact also which it creates in building the product or with this, taking it into the market, it's immense, sir. Um, and why is bootstrapping often the best startup point for any leads in the startup, sir? Bootstrapping का role क्या होता है? Like how exactly it helps them? So I'll start with a lighter note. There was a film, उसमें कहते हैं ना कि बदला लेगा भाई का, बाप का, सबका, right? Somebody is saying कि हिंदी में बोलिए, तो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे मिलके, ठीक है? हमारा हमारा उद्देश्य है कि सबको समझ में, तो डोंट वरी. सो उसमें कहते हैं ना सबका बदला लेगा, तो दिस इज द थिंग कि भाई से भी लेगा, बाप से भी लेगा, दोस्तों से भी लेगा, राइट? तो बूट स्ट्रैपिंग इज समथिंग कि हम जब अपना पैसा होता है तो वी गेट दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि उसको जुडिशियली हमको यूज करना है. सो अगर आपका पैसा होगा एंड यू वांट टू रन अ बिजनेस, सो ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे, यू विल हैव एस्पिरेशन कि मुझे कहीं जाके हॉलीडे पैकेज लेना है, मुझे थार खरीदनी है, राइट? ऑल दीज थिंग्स विल नॉट कम टू योर माइंड. आपके पास जब आप बूट स्ट्रैप करोगे तो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक एक पैसा, एक एक पाई सही जगह लगे. सो यू विल बी पुटिंग दैट फंड सही जगह पे लगाने की फॉर योर बिजनेस ओनली, राइट? रादर देन कि आप उसको वैनिटी पे खर्च करोगे और फाउंडर्स की आप सैलरीज पे खर्च करोगे. सो बूट स्ट्रैप इज समथिंग कि जब आप अपना हाथ जलाते हो, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपके हाथ जलते हैं. तो बूट स्ट्रैपिंग इज लाइक दैट. सो आपके हाथ जलाने के लिए कोई आग नहीं देता, वो आग आपको खुद लगानी पड़ती है, राइट? With this point, sir, कहाँ तक हाथ जलाए, कहाँ तक they can go ahead? Can you just guide them in that direction, sir? या सो वो वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो जानने के लिए जरूरी है कि अगर हमने हाथ जलाया है तो वेदर इट इज बेनिफिटिंग, उसका कोई कोई एक यूनिट इकोनॉमिक्स आ रही है. अगर हमें ये पता लगता कि मेरे हाथ जलाने से मुझे फायदा हो रहा है, राइट? मेरे हाथ जलाने से
मैंने कोई नॉब पकड़ी और मेरा हाथ जला, बट वो नॉब जरूरी थी दबाना क्योंकि देयर वाज सम मशीन गोइंग ऑन, और वो किसी की लाइफ के लिए जरूरी थी, राइट? इसी तरह हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं एंड वी आर बूट स्ट्रैपिंग, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास एक डिसिप्लिन आता है, एक रिसोर्सफुलनेस आती है, उस पैसे से कई चीजें की जा सकती है, राइट? देन Yes. आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स अगर समझनी हो तो अगर हमने कोई एक्स अमाउंट लगाया और हमने कोई धंधा बनाया, वो चलने लगा, हमें एक प्रॉफिट मिलने लगा, भले ही वो नॉमिनल आने लगे, उस स्टेज तक हमें बूट स्ट्रैपिंग करनी चाहिए। तो दैट इज द लिमिट कि हमें बूट स्ट्रैपिंग वहां तक करनी है कि जो हमने सोच रखी उसका वैलिडेशन मिला और वो चलने लगा, वो थोड़ा सा एक प्रॉफिबिलिटी दिखाने लगा, मतलब वो सस्टेन हो सकता है। मतलब हमने कोई खोमचा लगाया और हमने एक नया कोई फ्लेवर लाया, वो फ्लेवर चल गया, राइट? सो उस स्टेज तक अपना पैसा लगाना चाहिए, उस स्टेज तक बूट स्ट्रैपिंग करनी चाहिए टिल द वैलिडेशन। Okay. Uh, yeah. So सोच समझ के whenever you're doing a bootstrapping, we have to check कहाँ तक लेके जा सकते हैं. या Where I have to stop. ఇంత అమౌంట్ పెడితే మనకి సేఫ్ గా ఉంటుంది దట్ या హౌ ఇట్ కెన్ బి రాదర్ దాన్ గెటింగ్ లాసెస్ అండ్ వీ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు లాసెస్ या how to what extent it can be we have to make an assessment as per the business you call या it. I think आपको that's the आपको अगर लॉस होगा उसमें यूनिट इकोनॉमिक्स में, सो दैट लॉस विल नॉट बिल्ड अ ट्रस्ट। आप किसी के पास पैसा लेने जाओगे तो व्हाई दे विल इन्वेस्ट इन योर लॉस मेकिंग वैलिडेशन, राइट? तो आप खुद ही नहीं जाओगे। तो yeah. दैट इज अ लिटमस टेस्ट आल्सो Yes कि sir. वो यूनिट इकोनॉमिक्स इफ इट इज प्रॉफिटेबल, तो क्या होगा कि आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हो। Hmm. अगर आप कोई काम कर रहे हो, लेट्स टेक अ एग्जांपल, और आप कहते हो कि अपने अपने पेरेंट्स से कहते हो मुझे पैसा दीजिए और Hmm. मैं ये करूंगा, ये ऐसा करेंगे तो ये चीजें आएंगी, राइट? सो वो एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, आप उसको पहले किए रहते हो तो दे इज बिल्ड्स अ ट्रस्ट। तो वो यूनिट इकोनॉमिक्स अगर पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब वो वैलिडेटेड है, वहां तक बूट स्ट्रैप करना चाहिए, देन हमें आगे जाना चाहिए। Yeah, sir. यही बात है bootstrapping पे ही there is one more point which usually people will be very interested towards it, that financial discipline कैसे रहने चाहिए whenever they are starting any a startup. If they have a very good product which has market में उसका future है, they are able to see that it has a future. So financial discipline कैसे रहे तो better रहेगा, either students का रहने दो या किसी का भी startup रहने दो, या how they have to start and how their discipline has to be in terms of finances. सो फर्स्ट थिंग स्टार्ट्स विद, पहला तो बूट स्ट्रैपिंग हमने किया, राइट? देन बूट स्ट्रैपिंग को कंटिन्यू किया, और उसको कंटिन्यू करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो ये देखना है कि कैश फ्लो हमारा मेंटेन हो रहा है कि नहीं। Mm-hmm. सो दैट कस्टमर वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोई बिजनेस शुरू किया एंड होता क्या है कि आपने एक एक वेंचर लगाया, लेकिन उसके टेकर्स ही नहीं है, तो पहली बार तो ट्रस्ट नहीं आया और Okay. कस्टमर आपका तैयार नहीं है उसके लिए, राइट? तो पहले दिन से आपको पता है कि आपका कस्टमर रेडी नहीं है, लेकिन आपने कुछ किया एंड लोग उसको खरीद रहे Mm-hmm. हैं, राइट? तो आपके पास एक वैलिडेशन Mm. आने लगा। फिर वहां से कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत Yeah. जरूरी है कि आप एडवांसेस को कैसे मैनेज करते Yes. हैं, आपकी कैश बुक रिच दिखती है, क्योंकि कल का आपने आज जो काम किया है, आपके ऑर्डर कमिटेड हुए हैं, तो उसको नेक्स्ट डे का ऑर्डर करने के लिए आपको एक कैश चाहिए ना, तो Yeah. दैट शुड बी मेंटेन। सो Yeah. दैट कस्टमर वैलिडेशन along with कैश फ्लो मैनेजमेंट इज वेरी Mm. इंपॉर्टेंट। आपका कैश फ्लो बहुत जरूरी है, और कस्टमर वैलिडेटेड जो आपका शो, ये जो फ्लो चलता है, ये बहुत जरूरी है। सो दैट Yeah. कस्टमर फंडिंग मतलब कि कैश फ्लो बना हुआ है और आपके एडवांसेस सिस्टम में पड़े हुए हैं Okay. आगे का नेक्स्ट कुछ दिन के धंधा करने के लिए, Mm. राइट? सो Yes. ये बूट स्ट्रैपिंग की स्टेज यहाँ तक हमारी होनी चाहिए। Yeah, sir. Wonderful, sir. Thank you for that. And we have the audience of women entrepreneurs as well as the grassroots innovators. So उनके लिए थोड़े बहुत questions है, sir. Like सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनाना चाहिए, व्हाट विल बी द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और अदरवाइज ग्रॉस रूट इनोवेशंस के लिए, हाउ द Okay. सेल्फ हेल्प ग्रुप इज गोइंग टू हेल्प देम आउट. Okay. So one comment again came, English, please. So I'll be speaking in English and Hindi both. Okay. We'll try to give the information in both the language. Yes sir. Okay. Don't worry. So what we will do that
SSGs are a very wonderful model which has been created. So if you have a startup, आपका एक startup है, you are going to a SSG for some kind of support. तो let's take this situation, right? तो अब अगर आप लोग ना बार बार हिंदी इंग्लिश प्लीज करोगे तो इससे कुछ होगा नहीं, हम लोग दोनों करेंगे, राइट? वी अश्योर यू, हम बता रहे हैं आपको कि हम लोग दोनों में बोलेंगे, डोंट वरी, राइट? तो सब मिक्स्ड क्राउड है, तो सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो क्या होता है कि आप बैंक के पास जाते हो, तो बैंक इज नॉट गिविंग यू मनी स्ट्रेट अवे, राइट? आप वीसी के पास जाते हो, वीसी आपसे इक्विटी लेने के लिए तमाम चीजें मांगेगा, राइट? सो एक जो मॉडल जर्नी होती है, दैट इज बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग में आपने वैलिडेशन कर लिया, राइट? एंड देन it goes to debt funding through bank and some grants, right? Yes. And उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है हमारी VCs की, थ्रू इक्विटी, राइट? देन वी गो थ्रू द इक्विटी साइकिल, और ये होता है। SSGs why they are very important is एक ये कोलेट्रल फ्री माइक्रो लोन्स दे सकते हैं आप। Yes. वी लिव इन अ सोसाइटी, हमें पता होगा कि पीपल डू सम काइंड ऑफ कुछ करते नहीं एक सोसाइटी में, दे कंट्रीब्यूट सम मनी, एंड दैट Yes. मनी विद टेकन आउट एट सम पर्टिकुलर इंटरेस्ट, सब किसी इंटरेस्ट पे लेते हैं लोग जिसको जरूरत होती है, राइट? इन्वेस्टमेंट की देन तरह। हाँ, देन उनको कमिट करना होता है कि इतने दिन में इतने रुपए हम वापस करेंगे, तो एक उस तरह का कुछ चलता रहता है। कुछ फंड मैनेजमेंट होता है। तो SSGs कैन गिव यू कोलेट्रल फ्री, कोई चीज आपको गिरवी नहीं रखनी है, वो माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल होता है। दे कैन लोन यू विद दीज थिंग्स। आपको छोटा कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो SSGs कैन हेल्प यू आउट विद दिस थिंग। इवन द women entrepreneurs, if you are approaching to SSG for some social good, so एक मॉडल अच्छा वायबल होना चाहिए आपका, तो वो कोलेट्रल फ्री माइक्रो फाइनेंसिंग दे विल गिव यू, छोटे मोटे कैपिटल का सारी चीजें, राइट? देन देयर आर आल्सो few good government schemes. I'm sharing this slide again. जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे अगर ग्रासरूट एंटरप्रेन्योरशिप है, राइट? सो कोलेटरल फ्री लोन्स आते हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, और इवन द टेक एनेबल्ड बिजनेसेस के लिए भी होते हैं, राइट? सो इसकी लिमिट होती है 10 लाख रुपीस तक की। So under this different categories are there, शिशु, किशोर एंड तरुण, राइट? सो ये आपके छोटे बिजनेसेस के लिए आते हैं। इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो PMEGP पे आपको जाना पड़ेगा, राइट? उसके बाद भी नेक्स्ट स्टेज की क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं, जिसमें कि हम अगर आपको जाते हैं तो ये क्रेडिट गारंटी स्कीम इज देयर which gives you a loan in line of 20 CR, right? And Yes. that is also collateral free. Right? So this is the opportunity provided by the government, and SSGs are also supported by the government, right? So वो माइक्रो क्रेडिट स्कीम अलग है, और ये शिशु, किशोर, तरुण की, और देन ये आपके कोलेटरल फ्री स्कीम जो नेशनल लेवल पे चल रही थ्रू बैंक्स, दिस इज अगेन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ sector government has opened up. So these are the opportunities, these are really important. But कोई चीज आती है तो दैट कम्स अप विद अ कॉस्ट, सम डूज एंड डोंट्स होते हैं, राइट? क्राइटेरिया आपको बता दिया जाएगा ताबिश जी, डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स। उसमें क्राइटेरिया लिखा भी था स्लाइड में, बट विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन, राइट? हम आपको वो पॉइंटर्स देंगे। सो देयर आर द थिंग्स कि जो ये SSG के लोन्स होते हैं, जब आप किसी VC के पास जाओगे, द VC विल लेंड यू सम मनी, so sometime it is less loss to them, so they will write off, they will say अच्छा ठीक है, भूल जाते हैं, कोई लॉस मेकिंग हुआ। बट SSG लोन कम्स अप with a commitment because that is taken from the society. तो आपको टाइम पे उसको वापस करना है। एज अ बोरोवर यू हैव टू बी रियली रियली डिलीजेंट कि समय पे वो लोन वापस करना, बिकॉज दैट कम्स अप विद अ कमिटमेंट, सोशल कमिटमेंट होती है, राइट? और वो ट्रस्ट पे बिल्ड हुआ है, राइट?
सो वीसी से पैसा लेने में वो माफ कर सकता है, बट एसएचजी आपका माफ नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक सोसाइटी से लिया गया पैसा, लोगों के ट्रस्ट से आया हुआ है। तो दीज आर द डूज एंड डोंट्स। एंड इवन ये जो गवर्नमेंट के ये स्कीम्स हैं, ये भी एक इस तरह से आते हैं कि बैंक भी एक तरीके से लोगों से पैसा, लोगों के पैसे पे चलता है, राइट? यस। सो दीज आर द थिंग्स वन। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट द स्टार्टअप्स विल फाइंड इट सर? इट इज कोलेट्रल फ्री, इट इज बिल्ट ऑन टोटल ट्रस्ट। वो फेस वैल्यू पे है, आपका वैलिडेशन अच्छा है। एंड नो, इट इज नॉट जस्ट फॉर women entrepreneurs, इट इज फॉर एवरीबॉडी, यस, इट इज फॉर राइट? इट इज फॉर एवरीबॉडी। यस। women entrepreneurs के लिए स्पेशली स्टैंड अप इंडिया में, और कोलेट्रल फ्री loans through credit guarantee schemes are also there, यस। right? So every bank and every borrower, lender has a different segment for women. तो वो women के लिए अलग से भी जा सकता है, बट अलग से आपके लिए सब कोई अप्रोच कर सकते हैं, Yes. for the SSGs loans and for bank based loans, right? So risk aversion क्या है कि once वो बिजनेस चलता हुआ होना चाहिए। and why the SSG thing is important is something like वो locally जनरेट होगा, Okay. right? That SSG will be in that your area, so they know your repute। आपके एरिया का कोई होगा, वो आपको जानेगा, राइट? ऐसा नहीं है कि आप हम तेलंगाना में, हैदराबाद में बैठे हैं और हम पुणे में, चिंचड़ीवाड़ में हम अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, राइट? नहीं हो हम सकता। हम लातूर में अप्लाई कर रहे हैं, हम आसाम में कर रहे हैं, हम पासीघाट में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, राइट? तो वो लोकल एरिया होगा, तो वो एक ट्रस्ट पे, म्यूचुअली ट्रस्ट पे, दैट कम्स अप विद दैट ट्रस्ट। Yes, sir. Moving on to the banking funding, sir. What makes a startup bank ready? अगर बैंक के फंडिंग के लिए जाना चाह रहे, तो what the preparatory part the startups should do and how they have to have their face to be applied? देयर आर 3 V's, 3 V मैं आपको बताऊंगा, राइट? हाँ सर। फर्स्ट थिंग इज योर विजिबिलिटी। इफ यू हैव अ वेंचर, आप तुरंत उद्यम आधार एमएसएमई पोर्टल पे जाके लीजिए, दैट विल गिव यू विजिबिलिटी। आप ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे जाइए, व्हाट आर योर सर्विसेज, यू रजिस्टर। ओएनडीसी एक देसी अमेजोन है, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, कोई पैसा नहीं लगता अपना प्रोडक्ट आपको उस पर डालने में। इंडिया मार्ट और ये सारी चीजें हैं। ओएनडीसी प्लेटफॉर्म भी है, वो उस पर आप जाइए, उद्यम आधार लीजिए एमएसएमई का, तो उससे आपको विजिबिलिटी मिलेगी, यू विल बी विजिबल। सेकंड वी इज वायबिलिटी, राइट? वायबिलिटी में आपका क्या होता है कि आपके पास जीएसटी नंबर और ये सारी चीजें होनी चाहिए, आपका पैन, आधार और ये सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, और आपका बुक क्लियर होनी चाहिए, फाइनेंसेस दिखने चाहिए, आपकी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस हो, आपकी एनुअल रिपोर्ट्स फाइल होती हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे, या अगर आप सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस हैं, देन ऑल जितने बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जितना कैश फ्लो रिकॉर्ड्स है, दैट ऑल शुड बी देयर, दैट वायबिलिटी शुड बी देयर कि बिजनेस चल रहा है। एंड वैलिडेशन, आपका आईटीआर फाइलिंग चाहे ₹0, राइट? चाहे आप जीरो फाइल रिटर्न फाइल कर रहे हो, बट इट शुड बी देयर। आप जीरो जीएसटी फाइल कर रहे हैं, बट इट शुड बी देयर। तो वो दिखाएगा कि आप इतने दिन से मार्केट में हो, यू आर विजिबल इन द मार्केट, दैट ब्रिंग्स अ ट्रस्ट टू बैंक कैन सी कि दिस टुडे वी आर लिविंग इन अ डेटा ड्रिवन वर्ल्ड, राइट? मुझे मेरे बारे में किसी को जानना है, तो वो आपसे संपर्क नहीं करेगा, दे विल गूगल आउट कि शाश्वत पाठक कौन है, लाओ प्रोफाइल यहाँ चेक कर लेते हैं, वहां चेक कर लेते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, राइट? सो वो डेटा, आपका फाइनेंशियल डेटा अगर सामने बैंक को दिख रहा है, बैंक हैज एक्सेस टू ऑल योर फाइनेंशियल डेटा। सो विजिबिलिटी, वायबिलिटी एंड वैलिडेशन, 3 V's आर इंपॉर्टेंट। ये तीनों होगा तो ही आप बैंक के पास जा सकते हो। Okay. Wonderful. Any enlightenment about the documents that they have to carry whenever they are going? Since we have grassroots innovators also present, can you just help them out, sir? If they are going to a bank, so जितने भी डॉक्यूमेंटेशन इसमें हमारे आते हैं, whatever the documentation we have mentioned, you should have MSME portals, उद्यम आधार registration, you should have if you are an NGO, you should have Darpan ID from NITI Aayog, right?
एंड ड्यू डिलिजेंस डॉक्यूमेंट्स लाइक आपकी एनुअल रिपोर्ट फाइल हुई हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल, देन Yeah. आपका आईटीआर फाइल हुआ हो, ये सारी चीजें, एंड देन अ गुड बिजनेस प्लान। आप अगर पीएमईजीपी के लिए बैंक के पास जाते हो एंड यू आर गोइंग फॉर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सो Yeah. समथिंग वी कॉल इन फाइनेंशियल टर्म्स इज द डेप्ट सर्विस कवरिंग रेशियो, Okay. DSCR। सो डेप्ट सर्विस Mm. कवरिंग रेशियो, ये काफी बड़ा और यूज टर्म आपको लगेगा, बट बेसिकली क्या है कि योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड शो कि हु आर योर कस्टमर। आपने अपने कस्टमर को ले लिया है, यूनिट इकोनॉमिक्स इज गोइंग वेल, यू हैव वैलिडेटेड योर आइडिया, आपका यूनिट इकोनॉमिक्स सही चल रहा, प्रॉफिट मेक कर रहे हो, एंड नाउ फॉर स्केलिंग दैट बिजनेस, फॉर दैट ग्रोथ यू आर सीकिंग दैट फंड, Yeah. राइट? सो दैट कम्स अंडर योर डेफ सर्विस कवर रेशियो। मतलब सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि देन ईएमआईज विल बी इनकम्बेंट ऑन यू, जब आप Yes. ईएमआई पे करने आओगे, so through Mm. that business you will be able to pay that EMI, Yeah. and it is applicable to students also। अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो वो वैलिडेशन ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स इज देयर, लोगों को दिखना चाहिए कि यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्लियर है, आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल चुका है, आपको पता है हु इज योर कस्टमर एंड व्हाट योर कस्टमर वांट्स, आपको पता है ग्रोथ स्टेज के लिए क्या करना है, देन यू आर आस्किंग फॉर दैट कैपिटल, इसीलिए आप पैसे मांग रहे हो आगे बढ़ने के लिए, राइट? सो दिस ऑल गोज इनटू दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कहाँ तक बैंक वाले स्टूडेंट्स के ऊपर हाउ दे ट्रस्ट और व्हाट काइंड ऑफ एन एलिमेंट विल रियली हेल्प देम आउट टू गेट द बैंक लोन्स और एनीथिंग, स्टूडेंट्स परसेप्शन सर? बैंक वाले आर वेरी रेशनल, उनका जो क्राइटेरिया होता है जो मैंने आपको बताया वो एकदम क्लियर होता है कि आपकी विजिबिलिटी, वायबिलिटी और वैलिडेशन है आपके पास, तो स्टूडेंट अगर कोई वो कर रहा है तो उसकी भी विजिबिलिटी होनी चाहिए वेंचर की। इट शुडेंट बी, देखिए बिजनेस इमोशन से नहीं होता, हम्म। बिजनेस डजंट रन ऑन इमोशंस। यस यस। जहां भी कॉस्ट है, जहां भी पैसा है, सो इफ इट इज नॉट कमिंग जनरेटिंग अ प्रॉफिट और रेवेन्यू, राइट, सो वो चलेगा नहीं। पेपर आपका, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रॉन्ग नहीं हो सकती, आप झूठ बोल सकते हो, राइट? यस। सो प्रॉफिट, आई ऑफन से दैट प्रॉफिट इज अ माइंडसेट, बट योर कैश इज समथिंग विच इज अ ट्रूथ। आपका प्रॉफिट आपका आपका खुद का व्यू हो सकता है, बट कैश सच्चाई है। अगर यस। आपके पास वो कैश रिच दिख रहा है, वो वेंचर चलता हुआ दिख रहा है, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट दिख रहा है, वेदर स्टूडेंट है या कोई वेंचर है, तो ये 3 V's पार करने के बाद यूनिट इकोनॉमिक्स बन रही है एंड प्रोजेक्शन सही मिल रहा है, ओके। एंड लोगों को पता है कि आप किस लिए पैसे मांग रहे हो, दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज वाइबल बिजनेस, showing a viable business, so whether you are a student or whether you are some other led venture, bank will believe in you। या ये दिस प्रोसेस ऑफ बैंक फंडिंग में व्हाट विल बी द रोल ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री? हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे होता क्या है कि आप पहले क्या होता था कि यू यूज टू मेक डेटा कि इतने का मैंने इसमें खर्च कर दिया, एंड दिस वाज माय कॉस्ट टू दिस थिंग, एंड दिस वाज द एक्सपेंडिचर एंड ऑल, तो वो आप या। बनाते थे, सब चीजें करते थे। आज की डेट में बैंक हैज योर पैन नंबर, योर यस। ऑर्गेनाइजेशन पैन नंबर, जैसे ही आप वैलिडेशन पे जाओगे, यस सर। जैसे आप विजिबिलिटी पे जाओगे, या। राइट, और जैसे ही आप अपने वायबिलिटी पे जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट से आपके बैंक के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, क्या या। ट्रांजेक्शन आपने डिजिटली किया है, राइट? सो आप डिजिटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिंजेंट। ये नहीं दिखना चाहिए कि सम टाइम यू रेज्ड मनी, वो आप या। अपने लेजर पे खर्च कर रहे हो, और इट इज गोइंग टू समथिंग विच इज अनडिफाइंड, यस। right? We have seen people raising funds and buying, next day they are going to those VCs, they are going in a Mercedes। So VC ने तो आपको पैसा दिया था धंधा आगे बढ़ाने के लिए, आप मर्सिडीज में बैठ के घूम रहे, तो या। ये तो आपने उसको बताया नहीं था, राइट? आप अपने पापा से पैसे मांग सकते हो कि डैड आई वांट टू गो, आई वांट टू ओन एन मर्सिडीज, बट आप ट्रू वीसी ट्रू। के पास जाके तो नहीं कहोगे ना, नोबडी विल फंड लेंस में जाना चाह रहे यू। हैं। सो बैंक क्या करेगा, बैंक विल सी ऑल योर डिजिटल फूटप्रिंट। आज के डेट में आपका जो डे टू डे का खर्चा होता है, इवन वट एवर यूपीआई आर यूजिंग,
देखो आप बैलेंस हिस्ट्री में जाते हो, आपका ट्रांजैक्शन एवरीथिंग इज देयर, सो बैंक हैज ऑल Yes. द डेटा, Yeah. दैट शुड बी देयर. सो डील विद योर डिजिटल फुटप्रिंट, Yeah. कैश में कम से कम, राइट. What is the impact of compliances in it? हाँ, कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बैंक इफ दे सी डिफॉल्ट, इवन इफ दे सी कि आपका जीरो आईटीआर था बट आपने फाइल नहीं किया, दे विल आस्क यू. जीरो आईटीआर फाइल करने में देयर इज नॉट अ कॉस्ट, राइट. Yes. You can file. So it builds your trust, it builds your existence. अगर मैं आज की डेट में पूछूं किसी स्टूडेंट से या लेड वेंचर से या विमेन लेड या किसी भी एसएसजी से या किसी भी छोटे सोशल इम्पैक्ट बिजनेस से आप कितने दिन से काम कर रहे हो, Mm-hmm. तो आई वोंट बिलीव अगर उसको आईटीआर नहीं दिखाता है तो मुझे पता ही नहीं वो एग्जिस्ट करता भी था कि नहीं. Mm-hmm. टुडे विद एआई यू कैन मेक गुड प्रेजेंटेशंस कि हम वहां गए थे, हमने लातूर में पानी पहुंचा दिया, हमने आसाम में वर्षा करवा दी, हमने ये करवा दिया, राइट. सो यू कैन मेक एनीथिंग बट जो पेपर पे होता है वो दिखता है. Yeah. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. Yes, sir, absolutely. Digital transactions and compliance make an impact. This has to be clearly defined. That's the या very good, elaborated answer, sir. When you're just going for any kind of ventures, as audience are wide variety that we have. बच्चे हैं, students हैं, महिलाएं हैं, or we have other elderly people also who are into the startup journey or their business journey. And what kind of schemes are present for which kind of sector? Can you just elaborate few for the audience? इफ वी आर स्टार्टिंग छोटे छोटे लेवल पे चलने के लिए है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी पुरानी स्लाइड्स में. सो मुद्रा स्कीम इज गुड, Mm-hmm. राइट. Yeah. मुद्रा के अंदर मैंने आपको शिशु किशोर एंड तरुण बताया था, राइट. Mm-hmm. आई एम अगेन शेयरिंग दैट स्क्रीन Yeah, better. बिकॉज that has a very good They can take a overview. screenshot also if at all they are Yeah. interested. And So yeah. through this particular thing, collateral free loans आते हैं आपके, right. Mm-hmm. और शिशु में 50,000 की अर्ली स्टेज की कैपिटल यू कैन फैच. किशोर में यू कैन फैच अप टू 5 lakh rupees, right. And rest if you are moving to Tarun, so it is more like up to 10 lakh rupees, right. So ये जो कोई छोटा माइक्रो बिजनेसेस होते हैं, स्टूडेंट लेड वेंचर हैं जो सोशल इम्पैक्ट के काम कर रहे हैं, इस तरह के कर रहे हैं, तो दे कैन स्टार्ट विद मुद्रा, राइट. Mm-hmm. मुद्रा में दिस थिंग सारी चीजें हैं. ये ग्रासरूट एंटरप्रेन्योरशिप को भी आपको हेल्प करता है. देन यू सी impact, right. Around 52 crore loans have been sanctioned till date, which amounts to 32.61 lakh crore since 2015. So you see the volume, Yes, sir. right. ये अमाउंट है, ये 32.61 लाख करोड़ का, ये आपको ट्रस्ट दिखाता है कि इसके थ्रू कितना इम्पैक्ट हुआ है. Yes, sir. एंड ये सिंस 2015 इट्स रनिंग, Mm-hmm. राइट. Yeah. And if we are talking about women entrepreneurs, so almost 68% of the loans have been dispersed to women entrepreneurs in this, Mm. right. And the relevance to the startup, this Yeah. is foundational capital for the local tech enabled ventures, especially. ऐसा नहीं है कि खाली ग्रासरूट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, it is also doing the local tech enabled ventures, especially in tier 2 Okay. and 3 cities. So this is the impact. And if we move on to the credit guarantee scheme, so again DPIIT registered startups, your MSME registered Udyam number Yes. required, and all the things are there, right. Yes. All the 3 V's necessary: visibility, viability and validation. Mm-hmm. उसके बाद आपके सारे डेटा एंड रिकॉर्ड्स, ये कोलेटरल फ्री लोन अप टू 20 crore पर borrower, right. 85% of the default amount Mm-hmm. for loans up to 10 CR, And groups. right. And then 75% of the default amount for loan exceeding 10 CR. मतलब कि आपका रिस्क एवर्जन भी, रिस्क मिटिगेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है थ्रू दिस, और ये सारे डिसबर्स होते हैं थ्रू बैंक्स, राइट. सो L1 एनुअल गारंटी फी
काफी कम कर दी गई है इसमें, 1% कर दी गई स्टार्टअप्स के लिए इन 27 चैंपियन सेक्टर्स। Yeah. और वो चैंपियन सेक्टर्स इंक्लूड क्लाइमेट चेंज एंड दिस सोशल सेक्टर, right? So Yes. increased viability, availability of debt capital for startup is there, and it reduces debt risk, and आपको अपनी इक्विटी कहीं डाइल्यूट नहीं करनी, the Yeah. business is 100% yours. So that is the impact of these schemes, and these are the schemes available. Okay. If at all any student or any person want to know about different schemes, would you suggest any of the websites or any link where they can exactly extract They it? can they can they can just go on Startup India portal. That Yes. the playbook is there. Hmm. Always search for the credible sources. Don't Yes. just go on Chat GPT or Google or Hmm. something, right? Go for the True, true. credible sources. Credible sources की तरफ आप जाइए, Yes. और you look for the playbook, startup playbook, Hmm. राइट? True. स्टार्टअप प्लेबुक, एमएसएमई प्लेबुक और सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो एम का भी है, अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू भी है, एमएसएमई का भी है, डीपीआईआईटी की साइट पे पड़े हुए हैं सारी इंफॉर्मेशन, पीएमईजीपी है, मुद्रा लोन है, सबके बारे में सब कुछ पड़ा हुआ है, Yes. राइट? सो दे शुड नो द राइट थिंग्स, Hmm. एंड रादर देन गोइंग एंड मेकिंग चैट जीपीटी, मतलब आप चैट जीपीटी को गुरु बनाने की जगह खुद से थोड़ा सा एक अपनी भावनाओं को जगाइए, अपने अंदर थोड़ा सा वो लाइए, विश्वास लाइए और चीजों को ढूंढिए। Yes. Yeah, sir. Moving on to about investors or institutional funding part of it for the young entrepreneurs when we look at it. Exactly actually students has to think about institutional or investor funding, at which position, or you can just say at what TRL level you can just define onto it, sir. या सो टीआरएल लेवल वी विल फोकस ऑन टेक्नोलॉजीज, जब कहा Yeah, टेक्नोलॉजी if टेक at all एनेबल बिजनेस technology. होगा तो टीआरएल पे आएंगे, अदरवाइज सोशल सेक्टर एंड ऑल, राइट? सो होता क्या है कि पहले बूट स्ट्रैपिंग, वी आर Hmm. टेकिंग अ जर्नी, भाई से लिया, बाप से लिया, माँ से लिया, दोस्त से लिया, सबका पैसा लिया, अपना लगाया, Yes. Oh, yeah. वैलिडेशन किया, यूनिट Hmm. इकोनॉमिक्स पॉजिटिव आई, वी डिड कस्टमर वैलिडेशन, एक कैश फ्लो आना लगा पॉजिटिव, प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया। नेक्स्ट हम मुद्रा की तरफ जा रहे हैं, डेप्ट की तरफ जा रहे हैं थ्रू बैंक्स एंड अदर स्कीम्स, ग्रांट्स एंड ऑल। देन we realize कि the model which we have created, the product market fit we have created, it is something more repeatable, हम उसको बार बार कर सकते हैं, बारंबारता है, which is repeatable and which is a scalable business model, Yeah. जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं Hmm. और उसको एक ऐसे पॉइंट पे ले जा सकते हैं जहां पे उस पर एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो सकता है। Yes. देन वीसी विल ट्रस्ट यू, Hmm. राइट? वो जो पीछे की सारी चीजें बैंक को आपने दिखाने के लिए की, एंड योर ओन क्रेडिबिलिटी विच यू हैव अर्न्ड, जितना Invest. आपने विश्वास दिखाया, वो Yeah. नंबर्स आए, देन ये प्रूफ कि वो मॉडल इज रिपीटेड, दे आर स्टिल कस्टमर्स एंड दैट डिमांड इज एवर इंक्रीजिंग, दैट इज ग्रोइंग। Yes. So that repeatability and scalable business model, that is the point of inflection, वो ऐसा बिंदु होता है जहां से आप फिर वीसी फंडिंग के लिए जा सकते हैं। So that is from that inflection point you can go for the VC funding. Whenever any startup early stage होने दो या well established to certain extents they have come, what exactly the investors will look into their startup? What parameters will really drive the attention? Investors जब पैसे लेके आते हैं तो उनको invest करने के लिए वो what is that one point which they really concentrate on? कौन सी चीज को वो importance देते हैं? Okay, so before answering your question, there was one question dropped: how the angels and other people do the valuation, right? So Yeah. yeah, we will be covering this in this discussion. Okay, so don't worry. So होता ये है कि I told you कि if you are going to banks, आपका ग्रांट्स के लिए बैंक्स के लिए जाते हैं तो पेपर आपका एकदम टाइट होना चाहिए, राइट? सो दैट विल एक्चुअली प्रोवाइड
स्टेपिंग स्टोन फॉर नेक्स्ट स्टेज जब आप वीसी के पास जाओगे विद रिपीटेबिलिटी एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल, राइट? सो वीसी जो होते हैं दे हैव रिस्क एपेटाइट, राइट? सो वीसी के साथ अगर आपका कोई डिफॉल्ट होता है तो वो हो सकता है माफ कर सकता है, दे कैन टेक मोर रिस्क, वो पब्लिक मनी नहीं लगी है, राइट? वो राइट ऑफ भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सो दे लुक फॉर द एटीट्यूड, दे लुक फॉर द एटीट्यूड इन द फाउंडर्स, वो Yes. आपका फाउंडर्स का एटीट्यूड देखते हैं कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वेदर द फाउंडर्स आर एजाइल, दे आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड रादर देन प्रॉब्लम ओरिएंटेड, वो आपका एटीट्यूड देखते हैं। और आपका सारा स्केलेबल बिजनेस मॉडल वो सारे वैल्यू देखते हैं, राइट? इसी तरह अगर उनको वैल्यूएशन करना होता है तो क्या करते हैं वो कि वो उनके अपना पैरामीटर्स हैं, दे चेक फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेंड। आपको लगता है आपका आइडिया है दैट इज ओनली थिंग विच इज अवेलेबल, ऐसे 100 लोग बिजनेस कर रहे हैं, सो दे हैव एक्सेस टू दैट डेटा, तो दे हैव अ ट्रेंड कि इस बिजनेस की वैल्यू कितनी है। अगर आप ये कर रहे हो तो कहाँ पे जाके फेल होगा, राइटली? अगर मैं ये कहूँ कि हाउ द यूनिकॉर्न्स डेवलप्ड इन इंडिया, लाइक जैसे फ्लिपकार्ट में हम गए, राइट? सो क्या हुआ कि एक स्टेज के बाद आने के बाद जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे उन्होंने अपनी इक्विटीज सारी बेच दी, क्योंकि उनको पता था कि उस स्टेज के बाद वो ग्रोथ नहीं जा रहे, Yes. राइट? सो वो कहाँ पे कैश बर्न होके वो बिजनेस जाएगा, तो उस लाइफ साइकिल को दे कैन सी through their experience through different business models, right? So that business model analysis is very important, that projection is very very important, so that information is very important. So this is all data centric thing. Valuation किसी business का करना is highly data centric rather than aspirational, right? So आप aspirational हो सकते हो, बट वो डेटा से करते हैं कि वर्ल्ड में कहाँ इसकी जरूरत है, सही में चल पा रहा है, सप्लाई चेन, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो सप्लाई चेन वहां तक पहुंचा पा रही कि नहीं। आज की डेट में इफ आई से कि आपको कोई बिजनेस करना है एंड योर मार्केट इज इन अफगानिस्तान, सो गिवन आप तो सोचोगे नहीं यहाँ से हम सी रूट से भेज देंगे, सब कर देंगे, राइट? बट टेकिंग द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, मुझे ये पता है कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, बिकॉज ईरान इज देयर इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन ईरान, राइट? वहां पे देयर इज अ म्यूटिनी, तो वहां पे कंडीशन, आपका चाबहार पोर्ट है, उसके थ्रू आप अफगानिस्तान भेजते, राइट? सो सप्लाई चेन कैसे डिस्टर्ब हो गई, राइट? सो दीज थिंग्स, सो वैल्यूएशन करते समय ड्यूरिंग द वैल्यूएशन फेज एंजल एंड कोई भी इन्वेस्टर होगा, he will look into the realistic data, he will see from that lens कि सारी चीजें जो आप कर रहे हो उसमें जितने स्टेक होल्डर्स है वो चीजें चल रही, दैट इंजन इज रनिंग और नॉट, whether you are saying that my EV will run 1,000 kilometers on single charge, right? तो वो ये भी देखेगा whether that technology is feasible, क्या वो कितनी बार चार्ज हो सकती है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं 1,000 बार चलने वाला ईवी तो बना रहे हैं, बट यार ऐसा है कि ये केवल 100 बार ही चलती है, तो हम कॉस्ट कम कर सकते हैं। सो ही विल रीड द माइंडसेट ऑफ पीपल कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किस तरह की चीजें पीपल, हाउ व्हाट आर द थिंग्स पीपल लुक फॉरवर्ड, राइट? Yes. दैट इज द लेंस से है। Yeah. एक और चीज which people has to get enlightened, I feel that investment की कहीं से ले रहे हो, तो what will be the takeaway from our side, or what they expect, the investors? Is it good to go with a equity kind of thing, or is it go with a shares kind of thing? What would be the better option for the early stage startups? अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में नाउ देयर आर वेरी गुड schemes available and all, so till your validation is not done, till your unit economics has not passed, जब तक आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं हो चुकी है, वैलिडेशन नहीं हो चुका है, और एक प्रोडक्ट मार्केट फिट आपके पास नहीं आ गया, और कैश फ्लो, हेल्दी कैश फ्लो इज नॉट देयर, पॉजिटिव कैश फ्लो, चाहे छोटा हो लेकिन पॉजिटिव कैश फ्लो आपको दिखना चाहिए, राइट? दैट यूनिट इकोनॉमिक्स इज रहना चाहिए। वैलिडेटेड, टिल देन इट इज एडवाइजेबल कि आप अपनी इक्विटी, यू शुड कीप योर इक्विटी इंटैक्ट, right? Rather than having somebody asking for 40% or 60% equity for a small amount, वो आपका वैल्यूएशन सेट कर देगा, राइट?
and that will come up with the cost. अगर 40% पे आपको बोर्ड पे आ रहा है, so there are legal compliances. आपको उसको taking any decisions and all in future, you will have to include them in the board, right? So that will come up with lot of shackles. वो तमाम बंदिशें बाधाएं लेकर आएगा, right? So these things you have to keep in your mind. Yeah. Right? And focus not just on money, focus on कि अगर आप किसी को बोर्ड पे ला रहे हो, giving the equity, diluting your equity, so it should increase the value not just in terms of money, but उसका नेटवर्क कितना बड़ा है. Yeah. Whether that network is accessible to you, उसका नेटवर्क आप लेवरेज कर सकते हो, उसके नेटवर्क का उपयोग कर सकते हो. पता चला कि आप किसी ऐसे, टेक एन एग्जांपल, आप भूखे हो एंड आपको मौका मिलता है किसी से दोस्ती करने का, राइट? एंड उसके टिफिन में नॉनवेज रखा है, लेकिन आप वेजिटेरियन हो, राइट? और वो कह रहा है कि दोस्त ऐसा करो, मुझे अपनी घड़ी दे दो, गिव मी योर वॉच एंड आई विल फीड यू ऑल द नॉनवेज आई हैव. आप करोगे? राइट? सो डेप्थ बेस्ड वीसी के पास आप अगर आपको जाना है तो देयर इज वन क्वेश्चन. डेप्थ बेस्ड वीसी इफ यू आर अप्रोचिंग, सो जो यूनिट इकोनॉमिक्स पास हो रही है, देन यू हैव अ ग्रोथ प्लान कि you have to expand in some way. That is the right point, right? Yeah. So sometimes bootstrapping take 2 years to validate the idea. Yeah. Sometimes in healthcare sector, in deep tech, bootstrapping लगती है, right? But as an entrepreneur, you will have to see कि आपके अंदर कितनी grit है, right? That quality, that human values come into picture. एंड अपनी स्किल से आप पैरेलली कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हो जो साथ में आपको सपोर्ट कर रहा है. वी डिड इन आवर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, वी सपोर्टेड, वी वर लकी. I'll also mention we were lucky, but we did this. And meanwhile, VCs and the investors and even the banks and your lenders, they have they have matured a lot. उनमें भी मेच्योरिटी आ गई है, राइट? उनके पास वो वाला लेंस है कि वो उसकी लाइफ साइकिल देख रहे हैं. सो अगर आप सही डेटा के साथ जाओगे, सही एटीट्यूड के साथ जाओगे, सही सॉल्यूशन के साथ जाओगे, तो दे दैट बूटस्ट्रैपिंग दे विल सपोर्ट यू डेफिनेटली. इंक्यूबेटर्स तो करते ही है ना. Yeah. We give funding, we support Yes. 2-3 years, right? Yes. Institutional funding will be. Yeah. Yeah. We have Sudeep Roy raising their hand. Shall we address it at the end? Yeah. Or shall we go for that? Josna ma'am, is it possible for them to get unmuted, or you'll unmute? Yes, they can get unmuted. Yeah. There is one more question meanwhile Yes. from Mr. Janki Ram. So Sudeep ji, आप unmute भी कर सकते हो. Yeah. Should I ask the question? Yeah, please do. Yes. Yeah. Actually, the thing is, MSME Idea Hackathon, जो होता है हम लोग का इंडिया में, is a national competition. So in MSME Idea Hackathon, if an idea is selected, it goes to the idea development stage for MSME champion scheme. Yes. So once we have, if a startup has completed the idea development stage and completed the inspection and also got a completion report of that, so at that time, when we are on the stage of market entry, we want to scale up the idea, we are getting some pre-orders and create the unit. So is it possible for a startup with that record to get any type of fund or debt fund, or which you will suggest, like what type of scheme should we target where we can make some progress in that regard? Yeah. So agar if you want a small quantum of amount, so I told you that PMEGP is there, right? Working capital, they mainly give working capital. वो working capital देते हैं, right? Okay. So going to them will be like आप जाइए, but your business plan and your projection should be वो match करना चाहिए, real life, realistic होना चाहिए, right? Then credit guarantee scheme is also there, जो 20 CR तक collateral free loan दे रहा है, right? So अगर आप कोई industry like आज की date में waste processing is there, right? Solid waste processing. So if you have a validated technology and all, and we you are have working replicated into something, right? That sector only. So yeah. So if you have somebody from where you are getting input, वो waste उतना आ रहा है, and somebody जहाँ पे आप electricity में कर रहे हो या by products आपके जा रहे हैं, right? With all the compliances and all, that report is matching, that everything is there, that smooth path is there, that validation is there, that right cycle is there. So
they will support. Okay, understood, sir. Understood. Just to say, like, we are creating sustainable building materials from solid waste. Great, great. Janki Ramji, you can come. Hi, sir. Thanks for giving this opportunity. So I am really happy, sir, because most of the startups will have a proper clarity on marketing and all, but majority of them don't know how the numbers to be managed. I think out of all the sessions, I think this is the one of the top session I can say. Thank you. So, sir, as I mentioned the question, like, do you prefer, I mean, like, do you suggest any learning modules for the unit economics, revenue model, and operating model? Yeah. So first thing, like due diligence is very important from day one, right? आपको due diligence सही रखना है, and you have to treat your entity as something you are supporting, you are a part of. ऐसा नहीं कि आप बिजनेस ओनर हो तो आप ही बिजनेस हो, राइट? सो करना क्या रहता है कि फ्रॉम वन डे द सेंटिटी शुड बी मेंटेन, राइट? सो दैट वो जो इकोनॉमिक्स आपकी डे टू डे आपकी कैश बुक होती है, दैट शुड बी मेंटेन फ्रॉम डे वन. सो योर फाइनेंशियल शुड बी क्रिस्टल एंड क्लीन. Yeah, okay. Right? Yeah. And from day one, even if you take any big name, you take the name of Mr. Mukesh Ambani ji. Okay. So he is the employee of Reliance on 363 days, and on the date of AGM, he is managing director of Reliance. Okay. All the big people treat their business like this. Every day आप उसके employee हो अपनी organization. AGM के दिन you are responsible क्योंकि आपको answer करना है, right? That day you are the owner of that business. So have this kind of positive mindset. So अगर आपको salaries लेनी है, even from day one, you put that salary जरूर लीजिए. That is a good practice, but not inflated thing, because that will bring discipline in your organization. So that discipline and righteousness is important. So that cash flow and finances and your books will look very crystal solid. They will take you, they will tell you every day. अगर आप you are looking back in 1 week and other thing, you will see that कि कहाँ आप head कर रहे हो. अगर आपकी सामान बिक नहीं रहा, if it is not selling, you will see that you will need to pivot something. You will call your team, whether the problem is with the sales team or problem that our product is not popular with the customers or customer wants something like this, right? So वो आपको अपने finance book से समझ में आने लगता है. Yeah. So that is the first indicator. जब कोई बीमार होता है तो you check आप total blood count and all the things you do, right? It is something like that is the first primary report. एक total blood count कि आप करते हो, you know there is some infection. अब आगे के cause आप निकालोगे. Yeah. Sir, my last question, sir. Sir, my question is, my another question is, usually the startups who are in the prototype stage, they'll have some assumptions like can be the cost and can be the raw materials procurement. There is no certain set of standard, you also know. So if they go I mean, like, unit economics without having any prototype, will that be viable? Or no, the first thing is that your product market fit should be there, right? Second thing, yes. the prototype should be there. Now coming back to the prototype, फिर आप prototype के पीछे जाओगे. Okay. Then you will count कि how many mistakes we made. That if you take, you cannot say कि you made one prototype, आपने एक prototype बनाया, so that came in one iteration, right? आप perfect चीज नहीं बना सकते, और भगवान नहीं है, right? You are not playing like a god, right? So there will be lot many mistakes. So उस prototype की cost will be higher, which is coming to you. Then you suddenly you will feel that after spanning through T amount of time, you came to this prototype, and this is the method, shortest and best method. Okay, right? Yes, sir. Then Yes, sir. आपको पता है कि असली cost क्या लग रही है. Then you go to know the real cost behind that. Yes, sir. That Absolutely is true. the unit cost for your prototype, and then the things come into the business things, customer acquisition cost and all, how to go to market and other things, right? So that is the unit economics. आप sell कर रहे हो तो उस पे आपको profit मिल रहा है, whether you are selling 10 units
and you are getting working capital for next other 8 units or 4 units or not, Okay. right? Whether your team, you need a team to make 8 units, X number of team to make 8 units next day, but you have X minus team, whether you will be able to manage by giving them stimulus, उनको थोड़ा सा पैसा ज्यादा देके कर सकते हो, whether your Yeah. organization can sustain these things. This is something like very important aspect. It Yeah. is not that straight, but it is very straight. It is something which is felt with your business acumen. Yes, sir. Actually, I feel it's a completely based on strategy and how we manage the numbers. Yeah, I understood, sir. Thank you very much. Because we thought of doing that unit economics, but somewhere assumptions doesn't work all the time yeah, because it's not something like initial ideation. It's a yeah, real-time numbers. We need to play with it. yeah. I'm really Strategically, you have to make a move. yeah. Thank you, sir. Thank you for the answering the Thank questions you. very much. Yeah. We have another person, Kashif, raising his hand for Yeah, a hi Kashif. You can unmute yourself. Yeah, good evening, sir. Good evening, Good ma'am. evening. good evening. First of all, thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. Our pleasure. Pleasure. Sir, I would like to ask a question that what is your viewpoint on the royalty? Sometimes when we go for investor or incubation, they ask for a particular royalty. And what we usually see on the Shark Tank and then on LinkedIn, that many people are in favor of it and many are opposing it. So particularly, what are your views? So there is, see, during doing the business deals करते समय, there is not a fixed yardstick, right? कि अगर मैं आपको बताऊं कि जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है, you need to breathe for being live. There is nothing like this in business, other than maintaining the good financial stability, right? So these are the deals. So no deal is something like defined कि यही deal आप करोगे तो that deal will be beneficial to you. It depends on the condition. It depends on many factors, right? So if that royalty or the success money or the repeated fee payment or the kind of equity these people are charging, you will have to take decision based on many factors. One of the factor could be whether you have you can leverage their vast network. How you will be able to leverage the example I told you. Somebody asking you, your friend asking you to have the non-veg in his tiffin in lieu of the watch. आपके पास घड़ी है, वो लेके आप उसका non-veg खाओ, but you are vegetarian, right? So you look forward to something else, right? Maybe you will find somebody else who is non-vegetarian, but he has some veg option available, but that he will charge you something in different way, right? So these Yes, are all the deals. So there is no fixed pattern for a deal. Many things are good. Even people say that secrets are harmful, but ITC का शेयर तो सब खरीद रहे हैं. yes, sir. That is making business, right? We say Yes. we go on social awareness platform. हम कहते हैं कि smoking is not good, even not the passive smoking and all the things. But as an investor, अगर आपको पता है there is an opportunity that ITC share is going to boom by 50% in next 2 months, आप खरीदोगे, Definitely. right? So there is no fixed pattern. These are all different types of deal. It's very good. आपको इनके सबके बारे में जानना चाहिए, right? And use your peer network to take the decision. That's Okay, where sir. Thank you so incubators much. help you. That's where your peer network. Thank you so much, sir, for clarifying Thank my you. doubt. Yeah. Mr. Shivam, you can unmute and ask your question. And Yes. Dr. Ramadevi, next you can ask the question. You posted a statement that you have a question. ओके थैंक यू Yeah, सो Mr. मच ये जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें एक स्टोरी है उस पर थोड़ा सा हमको सजेस्ट करना हमारे यहाँ एक केस है कि वो राइस में डील करते हैं वो और थोड़ा सा प्रोसेसिंग करते हैं थोड़ा ट्रेडिंग करते हैं ऐसा है तो वो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत है उनको ऐसी चीजें हैं अगर बिजनेस माइंडसेट पूरा है वो
डेली उनका सेल होता है 50,000, उसके ऊपर मार्केट डे करता है। तो उस डील में हम लोग बैंक में गए, 2 बैंक में गए, SBI में गए और एक बैंक ऑफ बड़ौदा में गए। एक जगह अच्छा एक्सपीरियंस मिला, उन्होंने बोला कुछ दिन में आओ, देखते हैं, बात करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में और ये प्रोसेसिंग में डील करता है बंदा, तो उसका जो स्टोर करने की कैपेसिटी वो कम है फंड की वजह से। दूसरा, वो जहां से वो डील करता है मार्केट यानी कि होलसेल डीलर से, वहां जाने का कॉस्ट ज्यादा जा रहा है। तो इनके लिए हम फंड कैसे अवेलेबल करवा सकते हैं, कौन सी स्कीम में जा सकते हैं हम लोग? यानी कि ये एकदम प्रोसेसिंग भी नहीं है जिसमें हम PMFA में जाए या फिर PMHGP में, उसका स्टडी का भी क्राइटेरिया है, एजुकेशन का भी क्राइटेरिया है। तो इस डील ऐसे ये डील कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा समझाइए। आप अलग से बैंक को एक प्रपोजल दे सकते हैं, राइट। बट क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं उनका डिजिटल फुटप्रिंट नहीं होगा, राइट। वो बेसिकली कैश पे ज्यादा डील करते हो, दैट इज नेसेसरी। बट from this platform I cannot promote the wrong things, right? Even we should not do it, but there are some tactics, like some portion of their business वो उनको लाना चाहिए, मतलब उनका डिजिटल फुटप्रिंट आना चाहिए, राइट। वो हिस्ट्री बनाएगा और वही सेंटिटी बनाएगा, दैट विल अर्न द विजिबिलिटी, वाइबिलिटी एंड वैलिडेशन वहीं से आएगा, क्योंकि बैंक आपकी बात पे नहीं भरोसा करेगा, राइट। दे एट द एंड ऑफ द डे दे विल सी द डेटा, वो बुक देखेंगे। आपने आप 50,000 पर डे का बिजनेस कर रहे हो, आपने कितना टैक्स पे किया है, राइट। वो आपकी कैपेसिटी दिखाता है। अगर आप ये बताते हो मैं ये धंधा कर रहा हूँ बट मैं कैश में कर रहा हूँ, आप ऐसा करो ये करो, तो ये करेंगे। बैंक इस तरह डील नहीं कर सकता है। कल को आपने बैंक से पैसा लिया, आपने दिखा दिया वो लॉस मेकिंग बिजनेस है, तो रिस्क है ना यहाँ पे। हाँ, रिस्क है। तो वो तो पब्लिक मनी है, यस। राइट। तो उस दैट डिलिजेंस इज हाँ, इम्पोर्टेंट। ओके। उसमें हमने ऐसा किया था, उनका बिजनेस प्लान प्रॉपर, और उनका एक मैनुअल बुक है जो हमारी यूथ फाउंडेशन प्रोवाइड करती है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। और वो सब उनको हिसाब किताब भी बताया हम लोगों ने कि ऐसा पैसा जा रहा है, ऐसा पैसा आ रहा है। MSME रजिस्ट्रेशन किया है उनका। और डिजिटल की प्रैक्टिसेस उनकी 2 महीने से करवा रहे हैं बिजनेस पे से। तो कैश में, जैसे आप आपने उनको कहा, हम कैश में उनको ज्यादा बेस्ट डील प्रैक्टिस करते ये बताओ कि जो आपको वर्किंग कैपिटल है उसको आप खाली कैश में रखो, बाकी आप हैं। उसको, यस। राइट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके। Yeah, Rama Deviji, you have a question? Yes, ma'am. Good Yeah, evening. please. Good evening, one and all. Thanks for giving me opportunity to ask the questions. What sir said earlier, that was correct. So, ma'am, actually we are received from Startup India Seed Fund scheme 10 lakhs for development of prototype. After that we received 5 lakhs from IKP and all. Now we have to go for a PMUG. But banks, they are asking for the collateral only. But you are said collateral free. It is collateral PMUGP free. also. No, sir, they are asking the collateral for PMUGP scheme. We are 1 to 5 banks till now. We are at the third year stage. We are employed tribal women, rural women. So we are lag in that stage. We are generating the revenue, and also we are plan to exporting that RAM scheme. What yesterday they said, everything is okay our side, but the banks are not coming forward. What are the words they are giving, that is good, but the practicality is not happened till now, sir. We are at the stage of third year now. What can we Ma'am, do? first thing is this should be raised to DPIIT, right? Yes, sir, And we are having DPIIT also. no, it should be raised to their platform. Second thing, आप स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे जाके भी ग्रीवेंसेस में यू कैन रजिस्टर इट। थर्ड थिंग, अप्रोच कोऑपरेटिव बैंक्स में, वहां से आपको यू विल गेट मोर एक्सेस टू द SSGs एंड ऑल, जो माइक्रो क्रेडिट आपको दे कैन प्रोवाइड यू क्विकली, राइट। एंड देन कोऑपरेटिव बैंक्स हैव दैट काइंड ऑफ मैंडेट। ये ईयर एंड भी अप्रोच कर रहा है, they have mandate to disperse more and more funds to the running businesses. Okay. Then one more question, sir.
Shall you suggest me if we are going for a loan or angel investors also No, approaching us? first go Sir? for, Which one is better? just go for depth first rather than going to That- angel, because angel के पास जाने के पहले you should have that sense of repeatability and scalability, right? Okay. Okay. First we have to go that. Hello, sir. Yeah. Very good evening. Actually, sir, thank you for taking my question. Actually, sir, I have a question. I already have a startup, and soon we are thinking to patent a product. Mhm. But sir, the problem is the grants. We needed a grants to do this thing. So how we can avail the grants, because there are different companies they are approaching. They are saying that we will take 10 like 2% or 3% of success amount that you will get, and also they are charging some of nominal fees like 10,000 to file the grants. So shall we go over there, or we should go in a proper like government manner? So I will again ask you one more question. Yeah, sir. Why you need fund for this? Whether you want to do patenting, you want Yeah, fund for patent, right? So patenting. it will take some time, but it is absolutely free. You go to the Controller General of Patents Hmm. and Copyrights and all, CGPM website, right? Hmm. Every week there is one open house available at 8 a.m. or 9 a.m. Just check on that Controller General site. उस पे आपको you will get a video live video call, and उस पे impaneled आपके patent agents होते हैं, right? So Okay. from there you can choose, and and if you are a startup less than 2 years old, तो Yeah. startup India portal से भी you can choose one of the attorney. उसको डायरेक्टली वहां से पेमेंट आएगा. इसमें थोड़ा सा पेमेंट को उनको टाइम लगता है टू दैट, तो उसको अवॉइड करने के लिए दे विल से कि ये क्विकली हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, राइट? हाँ. बट दैट यू कैन नेविगेट थ्रू दिस थिंग. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर इफ यू आर अ स्टूडेंट, सो गो थ्रू योर College. इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल. Okay. एक AICT की कपिला स्कीम, राइट? सो एवरीथिंग विल बी रिम्बर्स टू योर इंस्टीट्यूशन. So, sir, actually, like how I should go over there, You are a student or somebody? like I am a student, but like एक साल हो गया है अभी, like I am an alumni. You are a alumni, right? हाँ. So find at least one intern from your host institution, Yeah, right? we have that. So do one thing, that go to somebody. Is IIC available in your institution? I am in Hyderabad. IIC. Yeah, we have incubation center. So through them, you go to the patent cell, right? And you Okay. approach that. You will also, since you are a alumni, you want this kind of support. So under Kapila, I think Padmini ma'am is very renowned in this thing. I think she has good experience. Ma'am, they can go through Kapila, right? Being a student. So, Then sir, how we can connect to you for more further yeah, details? further, I will guide you, because I Oh, think there is paucity of time. We want to take more and more yeah, questions. yeah. Sorry. Thank you, sir. No Once worries. again, thank you, sir. Please Ma'am, you are continue, on sir. mute. Ma'am, you are muted. Padmini, ma'am, you are muted. Yeah. As he is an alumni, he can attach either the juniors or faculty members as a Yeah. mentor. He can combine and then file a patent. Yeah. Patent And filing through also Kapila. to assure that the patent belongs to you, that value of that particular thing, the commercial thing, you can do a separate that kind of agreement where Yes. you will own 100% of the commercial value, and whatever is necessary, you will support in future, whatever Yes, sir. the agreement you get. Yeah. Okay, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thanks. Sir, shall we take Yes, ma'am. messages if we can go through and quickly answer? And we Quickly, have let's Mr. let's get your questions, then we'll do. We have one more. Prem Sai has raised one last So question. let's complete our thing first, Yeah, like whatever the questionnaire you have created. sir. Good evening, sir. Yes, ma'am. This is Chandrika from Ramsai Naukisan FPO. We Hello, good evening. established an FPO with 750 farmers. Yeah. But we are processing cashew nuts, sir. Okay. But whereas cashew fruit gone lots of wastage. 0% cashew fruit unused, sir. I mean, it
kept through wastage, but Mhm. you have to think cashew fruit processing. Mhm. Uh, could you please guide regarding these? And how can we generate income for the local farmers to do these cashew fruit processing, sir? Here Okay. So we are from. I think today's session we are more focusing on finance first thing, Yes, sir. but on the process I will tell you quickly because we have very less time now left, right? Oh, So do okay. one thing, since you mentioned that you are an FPO, so I assume you have a group of farmers, right? Yeah, And yes, they sir. are doing different 750 different tasks, farmers. right? So think Yes, sir. yourself as an unit, right? So Okay. one unit ask them through SSG thing from the state administration, from the district headquarters, chief development officer and all. You register 2-3 different kind of SSGs, right? You take that Okay. mudra thing into that thing, but the every unit should function independently in a different manner. One should procure the cashew processing thing, machines and Okay. technology. One should focus on procuring the material, right? Whatever the wastage material and whatever there, how quickly they will do. One should focus on supply chain. वो वहां से कैसे लाएंगे वहां तक, right? What do? Okay. And the fourth one will be branding and marketing team. So four Okay. different SSGs under your FPO, right? Okay. And Yes, sir. aligned to do a business. Yes. అక్కడి నుంచి ఎలా తీసుకొస్తాము దాన్ని validation, how to take it. That's the process, sir చెప్పేది. I hope you Okay, are ma'am. Thank you so understanding. Yeah. much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah. Sir, we Thank are you. running short of time, so quickly one or two questions, and then we'll just go ahead. Sure. Pathak, sir. Yeah. In terms of this, as this is of Young Entrepreneurship Summit that we have, the finale the people are going to. So could you just suggest them what kind of pitching will really help them out in this, at least YESummit point of view? Can you just guide them? From YESummit, this YESummit point of view, I'll see that your jury panel will be focusing on your team, right? They will be focusing on total addressable market. Yeah. That you should not say कि I'm digging a Kohinoor, मैं कोहिनूर ला रहा हूँ. So the first question, कितने लोग take कर रहे हैं कोहिनूर, right? Whether people will afford it or not. So that kind of thing. Then they will seek some financial statistics from you or some understanding of it, right? What is your burn rate? कितना पैसा आपको खर्चे के लिए चाहिए, कितनी सैलरीज चाहिए, फाउंडर्स कितनी सैलरी लेंगे. डू नॉट प्रोजेक्ट इन्फ्लेटेड सैलरी कि अरे मैं 2 लाख रुपए महीने से काम नहीं करूंगा, right? So because they are putting up money, they are looking forward to the sustainable business option and all. So you should have a clarity in your mind कि whatever is necessary for you to sustain, that should be your salary, but salary should be there, right? So एक महीने में व्हाट इज योर बर्न रेट, कितना पैसा आपको खर्च हो रहा है, अगर कुछ भी नहीं बिक रहा तो भी ड्राई रन में कितना पैसा लग रहा है, राइट? अगर एक ट्रेन का इंजन, इफ देयर इज अ डीजल इंजन एंड इट इज इडलिंग, एक रेलवे स्टेशन पे इंजन खड़ा होता है तो वो बंद नहीं होता है, राइट? सो देयर इज अ कॉस्ट, वो डीजल जलता रहता है, राइट? सो वो बर्न रेट कितना है, यू शुड नो. देन व्हाट इज द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, आप कस्टमर पर कैसे जाओगे, व्हाट इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. These are the economics. आप इन टर्म्स को याद कर लीजिए and have try to evaluate कि आप ये सारे डेटा अपने लिए दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं. You should be answerable to these things. And third very important thing is the runway, right? कि where it is going to end. वो जो आप पैसा दोगे वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, and उसके बाद क्या? What is the horizon of, what is the journey of this? Right? And I will again go further deeper into this, and I think that will cover your further questions as well. Which is very important that they need a clarity कि if you are asking for a fund, अगर आप कुछ पैसा फंड मांग रहे हो, so it should be आप X amount मांग रहे हो, so what is the diversification? Yes. They are not giving that X amount of fund कि आप अगले दिन से you are having a lavish lifestyle.
आप एक बहुत ही बढ़िया अद्वितीय लाइफस्टाइल लेना शुरू कर दीजिए, राइट? Yeah. आप 5 स्टार में खाना खाना शुरू कर दीजिए, राइट? Yeah. सो दैट शुड नॉट बी देयर। आप जोमेटो पे आप वो कर रहे हो, या स्विगी पे आप डाइन आउट पे जा रहे हो, राइट? Yes, इट sir. शुड बी समथिंग लाइक आपका कैपिटल कितना लग रहा है, कैसे खर्च आपका करूं? मार्केटिंग कॉस्ट कितनी जा रही है, सेल्स कितनी जा रही है, एक्विजिशन पे कितना जा रहा है, प्रोक्योरमेंट पे, एंड एट द एंड क्या चीजें प्रोजेक्शंस में आ रही That really है, राइट? matters for all the हाँ, audience. so That that really matters. diversification is needed. Yes. That clarity with a purpose is very important. हाँ. So it should come up with a purpose. वो purpose दिखना चाहिए, वो Yes. clarity दिखनी चाहिए, और ये terms आपके पास clear होने चाहिए कि आपकी टीम की कैपेबिलिटी, आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है। आप ये ना बता दो पूरे ब्रह्मांड में आप अपना प्रोडक्ट फैला दो, Nice. right? You are making something which is Realistic. getting propagated to whole universe, Yeah. right? It is not the truth, right? Yeah. Actual numbers, your customer acquisition cost, you should at least have some clarity on this. Don't cook up the numbers, Yeah. right? So ये सारी चीजें Yes. होनी चाहिए with a purpose. Purpose. Yes, that matters, sir. One quick questions, one or two I can just put in, sir. Students को funding के point of view में क्या myth रहता है generally? A one word question you can just answer. This is a one word answer I will give you, and it has already been asked. अभी किसी ने Yeah. पूछा था कि मेरे पास फंडिंग नहीं है, मैं ये करना चाहता हूँ and all, right? So the first myth is I do not have cash to go ahead, to start, right? The biggest myth is I don't have cash to start. You can start without cash, with the right set of things. One best habit which a founder has to build. That is something like frugality. आपके अंदर एक जिजीविषा होनी चाहिए कि आपको ये करना तो किसी भी तरीके से आप कर लोगे. You should have that frugality. You should be very, very natural. You should be very natural in your approach. You should be adaptable. आपके अंदर frugality होनी चाहिए, जिजीविषा होनी चाहिए कर. One thing. What is the one mistake that might really kill their startup? This is very important. जो मैंने आपको पहले बताया था कि all 364 days, including the leap year, you are the employee of the company, and Yeah. at the date of AGM, you are the owner of the company, right? So never mix your personal your finances with the company Yes. finances. Absolutely. Don't from day one, don't always justify your salary, Yeah. right? So your company's finances are not your finances. Yeah. People mix it. Yeah. Yeah, that's it from our side, sir. We have few questions also. I think if the time is running short, Sure, we can we just can go do ahead 2 questions if we can close by taking a quickly. question in the. But let's freeze to these 2 questions. Now, if someone is interested, we can have 3 questions, but quickly. Yeah. Okay, I think we should freeze to these 2 questions. Yeah. Jyotsna ji, I think we can answer the questions which have been given in the chat bot later, or we can personally get connected with the questions and reply them up because of the running short of time. Yes. If sir, if you are okay, can drop your email ID in the chat box. Yeah, I'm and, dropping. And they can ask you question over the email. And the one only thing is that the PPT for the national pitching, they'll get it in the end of the bootcamp or the previous day of bootcamp, the points and everything what they have to cover. Yeah, the audience were really amazing, and we really had a great, interesting session, sir. Thank you, Dr. Pathak ji, and Thank for you, ma'am. empowering the students with, or the participants with, the financial literacy. Thank you so much for that. I hope participants have got immense knowledge. I have one announcement also. We are Yes. hosting Global Tech Stars Startup Weekend Okay. at our campus on 30th, 31st, and 1st.
This is the second edition, 54-hour hackathon. Yeah. And if you are interested, you can come and experience. You can see the business modeling and other things. So people who are there in Telangana, in Hyderabad, I will put that on the group. You can get the information. If you want to join, you can come up. Thank you. So you can Yeah, share the over to PPT you, with girls. us and Sure. what the announcement just Sure. you have made. So we'll I'll put do, it ma'am. in the group. Okay. Sure. So everyone will get in the slides and everything with the larger Sure. group of YESummit participants. Yeah. I'll request if there are like people who are joined here and not into the WhatsApp group of participants. Somebody is asking for LinkedIn. I'm just posting. Don't worry. Yes. मैंने फीडबैक फॉर्म भी डाल दिया है चैट बॉक्स में. आई हैव एडेड द फीडबैक फॉर्म. प्लीज फिल द फॉर्म. और सर ने अपना लिंक्डइन भी डाल दिया है. मैम, इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड योर लिंक्डइन सो दैट people can get connected with you also. Sure, sure. So thank you everyone for joining in. Thank you, ma'am, for moderating Thank you. today's program, and thank you, sir, for the giving the. And all the best to all the participants. Yes. Thank you, ma'am. And So thank kal you, Youth Head yes, Foundation, the beautiful team, for taking Thanking up you. this initiative It's a year very after valuable year, the 9th information. edition. कल हम Yes. लोग इसी टाइम पे मिलेंगे 5 o'clock. We will be together at 5 o'clock. Tomorrow Thank I'll you. see you, everyone, about the entrepreneurship. There's more coming up about the entrepreneurship with tomorrow's speaker. Thank you very Everyone. much, sir, Okay. for the giving Uh, this opportunity for everyone. if Especially, it's not like a session. I yes, felt like an interaction mostly. Thank you. and Yeah. everyone can on the video for like 2 minutes. We'll just take a screenshot. Kishori, done? Yes, thank you. Thank you. Thank you, everyone. everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks a lot for this. Thank you. Sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thanking sir, everyone given information. Thank you very Thank you much. so much. Yeah. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, madam. धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद, madam. धन्यवाद.